उसमें बीच में तुम नहीं दिखा पा रहे थे। अरे फिर चला गया। चला गया तो क्या करें बताओ, हम सेमिनार करने जा रहे हैं। शुरू में भी आया, अभी उसमें भी आया। Hello, Ashish da. Hello, how are you? See you, good to see you. At least তোমাকে দেখা যাবে। Good evening. Good evening. আমি Wish you একটু good luck. টেনশনে আছি যে আমার পাওয়ার পয়েন্টের ভেতরে তো অনেক ভিডিওগুলো ঠিক করে রান করলে হয়। Okay. ये डॉक्टर आशीष जी मैंने देखे कितने लोगों को इकट्ठा कर लिया यहाँ पे। मैडम को भी बुला लिया अल्टीमेटली। That is wonderful. देखिए। How are you? I am fine. Great. आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप एकदम फ्रेश मूड में हैं इस समय। Have you heard about Dr. Taral Nagda and his wife? I just heard. Yeah, today only we heard about that. Yeah. Both of them have been operated and doing better, but that is a very sad. Very sad, very sad. Yeah. Oh. बाद में देख लेंगे। मैं रख लिया। तो हम लोग शुरू करते हैं, 6 बज गए, हम लोग को टाइम हो गया है। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग। ओके? Sure. Just 1 minute. नमस्कार। आज हम लोग त्रिशला फाउंडेशन के 24th वेबिनार, लाइव वेबिनार में हम लोग आज यहाँ पर हैं और आज इस वेबिनार में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारे बीच में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी की एक सीनियर डिप्टी डायरेक्टर हमारी हैं, मैडम स्वाति चक्रवर्ती मैडम हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और उन्होंने असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया, ऑगमेंटेड डिवाइसेस में भी किया। उसके बाद इन्होंने IICP ज्वाइन किया और IICP में 30 सालों से कार्य कर रही हैं और उनका अपना बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। हम लोग तो अभी 15 सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और मैडम 30 सालों से काम कर रहे हैं, तो हम लोग का डबल एक्सपीरियंस मैडम के पास में है। और सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के लिए हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ समस्याएं रह जाती हैं और उनको हम मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे करें और उसका तरीका हमारे पास होता असिस्टिव टेक्नोलॉजी का।
बिना असिस्टिव टेक्नोलॉजी और ऑगमेंटेड असिस्टिव डिवाइसेस के इन बच्चों को पूर्णतः हम लोग यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत सारी समस्याएं होती है, सेंसरी प्रॉब्लम्स होती है, मोटर प्रॉब्लम्स होती है, कुछ विजन की प्रॉब्लम्स होती है, कुछ लोग, लेकिन मेंटल आईक्यू कैपेबिलिटी 70% बच्चों की बहुत अच्छी होती है। तो वो अपना पूरा करके दिखाएं, उसके लिए ऑगमेंटेड और असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो आज हमारे बीच मैडम स्वाति चक्रवर्ती मैडम हैं, जो जिनका अपना 30 सालों का अपना एक्सपीरियंस रहा है। तो बहुत अच्छा हम लोगों के लिए रहेगा, एक नई जानकारी मिलेगी। और मेरे को लगता है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग की जानकारी शून्य के बराबर है। और मैडम का जो इतना लंबा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारी जानकारियां मिलेगी और हमारे पेरेंट्स इसका लाभ उठाएंगे। और ये हमारा जो लाइव वेबिनार है यूट्यूब पे, हमारे जो लाइव सेशन के जो हमारा सेक्शन है वहाँ पे रहता है, वहाँ पे तो पेरेंट्स और जो भी हमारे स्पेशलिस्ट से बाद में भी देखते रहते हैं। इस कार्यक्रम में हम डॉक्टर आशीष घोष का भी वेलकम करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुनंदा मैडम भी आ गई हैं, डॉक्टर VRP राव मैडम भी हैं, डॉक्टर गायत्री मैडम भी हैं, वो लोग भी सभी का वेलकम मैं करता हूँ। और मैडम डॉक्टर स्वाति चक्रवर्ती मैडम, आप प्लीज वेलकम टू आवर Trishla Foundation webinar. Thank you, Dr. Jain. And I'm really privileged to be here actually with you all today. And actually, I think it's not a matter of how many years I'm working for. Actually, what matters is the attitude to learn and attitude to work. That is the main thing. And I think as far as I have read about Trishla Foundation and I have seen the videos that you kindly sent me with your email, and I think that it's really very, very good standard of work and really international standard of work. And I would like to appreciate that, and I would like to thank you for that. And I think this sharing, actually, I would like to share our experience with you, so that and I feel that it's better to learn from the users and the parents, the families. They are the best teachers. So I hope that after today, actually, I will also be able to learn from you, and that will be a great privilege for me. So thank you very much. Now I would like to share my screen and start with the PowerPoint presentation. Is it needed to be translated in Hindi? I think so. My Hindi is very bad. My Hindi is really poor. I can understand very well, but if I start speaking Hindi, yeah. So, I'll be ashamed of my Hindi. Madam, what will be that? You will speak on one topic, then Dr. Varid will translate in Hindi also. Okay, okay. That will be good. That will be good. And I can speak tutti-futti Hindi, तो थोड़ा बोल लेती हूँ, मगर बहुत खराब है. Pronunciation is horrible. I will try to summarize in Hindi a little bit. Okay. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. So I'll be talking about assistive technology for persons with multiple disabilities and complex communication needs today. You know that we all work in the same area with cerebral palsy, and cerebral palsy covers multiple disabilities. Yeah. It's not only neuromotor impairment, it also covers complex communication needs. It also covers, sometimes it also covers audiovisual problems like hearing impairment and visual impairments. So it's multiple disability and complex communication needs. And as I have said that I am a Deputy Director of ICT in Indian Institute of Cerebral Palsy, and I'm also the Secretary of International Society for Augmentative and Alternative Communication India chapter. So when I speak, I wear two hats. So thank you very much. I'll start my presentation. I hope it's clear, isn't it? Yeah. Okay, thank you. I will start with a video clip, a very short video clip, which will explain, I think, which will summarize what I want to speak about. Sorry.
child here. The child is crying, and the mother and the special educator, they are trying to press a switch, and the little elephant car is coming towards the child. Now you can see, you have to look at the child, observe the reaction of the child. Now the child has stopped crying. And now the child understands that if he presses the switch, now he looks at the switch, if he presses the switch, the elephant moves. That is what assistive technology does. It's a battery operated toy. The child cannot operate the battery operated toy by herself. So this switch has been adapted with the toy so that the child can press the switch. It's an electromechanical switch. I'll come to these switches in detail later on. But this is a little switch that the child presses, and then the child understands that if he presses the switch, something happens, something interesting happens. That is what assistive technology does, and it is wonderful. So assistive technology devices are any item or piece of equipment or product system, whether acquired commercially off the shelf, modified or customized, that is used to increase, maintain or improve functional capabilities of an user with a disability. So आप खरीद भी सकते हैं, ये commercially मिल सकता है, ये भी हो सकता है कि commercially available नहीं है, you will have to adapt it or modify it or customize it. And basically it is used, बढ़वा देते हैं and maintains functional capabilities of an user with a disability. And assistive technology services are these are services that directly assist a child with a disability in the selection, acquisition or use of an assistive technology device. कौन सा assistive technology device लेना पड़ेगा, कौन सा select करना पड़ेगा, वो decide करता है. How to get it and where to get it from and how to use it. All these are decided by assistive technology services. So basically assistive technology services does evaluation of the needs of a student, purchasing, leasing or otherwise providing for the acquisition of assistive technology devices, and selecting, designing, fitting, customizing, adapting, applying, maintaining, repairing or replacing assistive technology devices. Any of this comes under the umbrella of assistive technology services. It is well understood that coordination of other therapies like physiotherapists, occupational therapists, and other interventions or services are also required to decide about assistive technology services. The training and technological assistance necessary for the child or the family of such child, and training and technological assistance for professional employers or other individuals is also necessary. So if say young adult who goes for job in a special, in a non-special setting, in a regular setting, then and the child, the young adult cannot use a keyboard, then the assistive technology service provider has to advise the employer how to adapt the computer or whatever the system is there so that that young adult can use it. It is a continuum from no-tech to high-tech. We call it assistive technology, but it starts with no-tech. No-tech is simple, needs little maintenance, very little maintenance, limited or no electronics. I can talk about my glasses. These are no-tech or low-tech assistive technology. Without my glasses, I can't see. And this is a regular assistive technology device. This is simple, requires very little maintenance, has no electronics. There are mid-tech assistive technology devices which require some maintenance, some training, and more electronics, like a calling bell or a remote control switch. There are high-tech assistive technology devices which require complex electronics, needs more training, more maintenance. These are hardware software systems, basically. So who uses assistive technology? Any individual with special needs uses assistive technology to accommodate limitations due to their disabilities. You can see the first picture. This child can only operate on the computer while the child is in standing position. So this special standing box has been designed so that the child can stand comfortably
and can work on the computer. The workstation has been designed in a special way. So it is very easily understood that assistive technology needs to be pragmatic. It cannot be hi-fi rocket science. Has to be affordable so that we can get it easily. Has to be flexible so that someone who is at the age of 5 will be soon will be 15 years old in 10 years time. So the assistive technology he uses should be flexible to match his needs, and it has to be culturally relevant. We being in India, we understand this very clearly, that our multicultural and multilingual situation demands culturally relevant assistive technology. Because I speak Bengali, you speak Hindi, and there are Tamil speaking people in our country, there are Malayalam speaking people in our country, there are Gujarati speaking people in our country. So when we talk about festival, you talk about Holi, we talk about Navratri, we talk about Durga Puja, we talk about say some other festivals like Posh Sankranti, and then in South they talk about Onam and Pongal. So culture is very diverse in our country, and assistive technology has also needs to be diverse and culturally relevant. What are the different types of assistive technology? Firstly, I will start with the furniture, work surfaces, mounting devices, and workstations. These are crucially important. The child must sit comfortably. You also work with cerebral palsy children, so you understand that very well, that if the child is not seated comfortably and in right posture, the child cannot work. So furniture and work surfaces or workstations are very important. Mobility devices, you know, mobility devices are very common actually. They are crutch, then walkers, then motorized wheelchairs. So these are mobility devices. There are low-tech devices for activities of daily living. These are low-tech devices like calling bell, like a press switch. So these are actually low-tech devices for daily living. Computer access is quite complicated. There are different kinds of hardware and software. There are general resources. There are computer and software, software for physical disability. There are software, special software like JAWS and things for visual impairment. There are learning software for learning disability and for special education. So computer access is quite varied. There are aids for people with low vision and visual impairment. There are aids for people with hearing impairment. We all know that the hearing aids and cochlear implants. Augmentative and alternative communication devices and software. I'll talk in detail about this later. And electronic aids to daily living or environmental control units. These are, till now, these are quite new in our country. These are devices actually which operates all the electronic devices in my room or in my living area with one single remote switch. So I enter my flat and I press this remote and the light glows, the fan runs, and then I can run my microwave, I can run my TV, I can operate my washing machine. So all electronic or electrical gadgets can be operated by a single electronic aid. These are called electronic aids to daily living or environmental control units. We must understand that it is a question of right. It's not a question of excuse me ma'am, I think should we अभी तक का जो है क्या उसको थोड़ा सा हम लोग communicate करते हैं? क्यों नहीं? Thank you. Ma'am, will you please revise your slides quickly so that I can okay, thank you ma'am. Ma'am, sorry to interrupt, but वो एक portion खत्म हो गया था तो मैंने सोचा कि जी मैम हम लोग जो सेरेब्रल पाल्सी में असिस्टिव टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मैडम हमारे साथ हैं यहाँ पर डॉक्टर स्वाति चक्रवर्ती। इनका बहुत ही लंबा एक्सपीरियंस है, पिछले करीब 25-30 साल का IICP के साथ भी काम करती हैं और मैडम का काफ़ी अच्छा इंटरनेशनल ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस है।
तो हम मैडम को थैंक यू बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द त्रिशला फाउंडेशन की मैडम ने यहाँ पर हैं आज हमारे साथ और वो इनके बारे में बता रही हैं और काफ़ी अच्छी चीज़ें मैडम ने शेयर करी हैं। मैं एक शॉर्ट में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, हम लोग यूजुअली हमारा एक जो सोचना होता है कि शायद हम केवल वॉकर की या किसी स्टिक की इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं, जबकि ये ऐसा नहीं है। ये हम लोग को समझ लेना चाहिए कि कोई भी ऐसा मशीन टाइप की चीज है या कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जिसको कि हम या तो खरीद रहे हैं मार्केट से या वो हमने अपने हिसाब से बच्चे के हिसाब से उसको मॉडिफाई करके बनवाया हुआ है, लेकिन इस तरह की कोई भी मशीन, कोई भी चीज जो कि बच्चे की जो फंक्शनल जो या जो सीपी पर्सन है या जो पर्सन जिनको साथ कोई समस्या है उनकी जो फंक्शनल कैपेबिलिटी है उसको अगर इम्प्रूव करता है, वो अपने काम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है किसी डिवाइस की मदद से, तो उसको हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी कहेंगे। और ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है, जो हमारी जो सर्विसेज हैं उसमें कई तरह की चीज़ें आती हैं जो कि इसमें ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली किसी को कुछ भी दे दिया। आप पहले बच्चे की जो स्टूडेंट है या जो भी लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उनकी नीड को असेस करना होता है कि उसको क्या ज़रूरत है, किस तरह की, क्या उसकी एज है, क्या उसकी प्रॉब्लम है, किस चीज के लिए उसको, कैसा उसका बैकग्राउंड है, किस तरह की टेक्नोलॉजी को वो अडॉप्ट कर पाएगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें या तो खरीदना है या फिर हमें कहीं से लेकर के उसको कस्टमाइज करना है। तो कौन सा डिवाइस लें, उसको कैसे डिजाइनिंग करें, कैसे उस पर्सन के हिसाब से उसको फिटिंग कराएं, कैसे उसको मेंटेन करना है, मतलब उस डिवाइस से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो सारी सर्विसेज को हम असिस्टिव टेक्नोलॉजी सर्विसेज, एक पूरा फील्ड है जिसको कि हम कहते हैं, जो कि इन सारी चीजों से रिलेटेड होता है। अभी शायद हमारी कंट्री में इतना डेवलप्ड नहीं है, लेकिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है ये एक जो बाकी तरह की जो थेरेपी है या हम कुछ भी अगर सर्विसेज दे रहे हैं किसी भी डिसेबल पर्सन को, उसके साथ कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। और उसके लिए ये नहीं कि हमने लिया और लेकर के दे दिया। बच्चे की ट्रेनिंग या उस पर्सन की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि अब तुमको इसको ऐसे ऑपरेट करना है, और जो ट्रेनिंग दे उसको खुद को प्रॉपरली मालूम होना चाहिए, वो ट्रेंड होने चाहिए कि उसके लिए क्या एक्चुअली जरूरत है और इसके लिए ये फिटिंग है कि नहीं इस पर्टिकुलर, और कब उसको चेंज कर देना है अकॉर्डिंग टू द एज और अकॉर्डिंग टू द जैसे जैसे एज बढ़ रही है या जैसे उसकी प्रॉब्लम्स चेंज हो रही हैं। तो ये सारी चीजों के लिए पूरा एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए और बच्चे को ट्रेन करना चाहिए। तो ये जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है ये होती क्या है, कितने तरह की हो सकती है। हम ये कह सकते हैं जब टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी है तो उसी के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। एक जिसमें बहुत कम टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है या नहीं के बराबर हो रहा है, तो हम बेसिकली अगर मान लीजिए कि कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लगा रहे हैं, बहुत कम या बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं चाहिए, अगर एक छड़ी बच्चा यूज कर रहा है तो उसमें शायद बहुत ही मिनिमम मेंटेनेंस की जरूरत है उसमें भी, लेकिन उसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक नहीं लग रहा है आइटम और उसमें कोई बहुत ज्यादा इस तरह की टेक्निक नहीं लग रही है, अपार्ट फ्रॉम ये कि भाई उसमें कुछ रिपेयरिंग की जरूरत ना हो, बच्चे की अगर बड़ा हो रहा है या कुछ और है तो उसको चेंज करना है साइज के हिसाब से। दूसरी तरह की हो सकती है जिनमें थोड़ा सा मेंटेनेंस चाहिए, थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक्स उसमें इस्तेमाल हो रहा है कुछ हद तक। और तीसरे हैं बहुत ही जो हाईटेक वाले होते हैं, जैसे कि अब तो काफी अच्छे हाईटेक डिवाइसेस आ गई हैं, मोटराइज्ड व्हील चेयर्स आ गई हैं, और जैसा मैडम ने आगे भी फोटोग्राफ्स में दिखाया था कंप्यूटर्स पे बच्चे काम कर रहे हैं और उसके साथ जो सिटिंग अरेंजमेंट या कहना चाहिए स्टैंडिंग अरेंजमेंट है वो इतना हाईली टेक्निकल है, एडवांस्ड है। और इस तरह की जितनी भी चीजें हैं जिनमें काफी, लेकिन उनमें डेफिनेटली मेंटेनेंस भी चाहिए और उनको खाली खरीद लेने से नहीं होगा, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग की उसको यूज कैसे करना है ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इसीलिए कस्टमाइज की बात होती है। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, बच्ची ने टेबल है, इस पे कंप्यूटर चला रही है,
है लेकिन वो उसका सिटिंग बैलेंस शायद उतना अच्छा नहीं है, तो उसके लिए उसी तरह का एक बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइन एडेप्टिव स्टैंडिंग एक असिस्टिव डिवाइस ही हम इसको कह सकते हैं, जो कि बनाया गया है बच्ची के अकॉर्डिंग, और वो आराम से उस पर काम कर पा रही है। इसी तरह से नीचे वाली फिगर में भी आप देख रहे हैं कुछ साइक्लिंग डिवाइस टाइप की चीजें हैं, जिसको कि जिनकी सीटिंग और हाइट और सारी चीजें जो भी यूज करेगा उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया गया है। तो अब इसमें ये सारी चीजों से हमें ये समझ में आता है कि जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी है वो जैसा हम लोग शुरू से बात कर रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द नीड होना चाहिए, अफोर्डेबल हो, हमारे कंट्री के हिसाब से वो सारी चीजें अडेप्टेड हो। जैसा नहीं है कि आपने कुछ भी खरीद के ले आए उसको यूज ही नहीं कर पाए, जो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए जिसमें कि ज्यादा दिन के लिए यूज कर सके, उसके एज के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जा सके, और डेफिनेटली कल्चरली रेलेवेंट होना चाहिए। हर तरह की चीजें हर तरह की कल्चरल में यूज कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए पर्टिकुलर नीड के अकॉर्डिंग अफोर्डेबल प्राइसेस में डिजाइन किया जाए, वो ही बेस्ट असिस्टिव टेक्नोलॉजी है। I think यहाँ तक मैडम आपने किया था कवर। This I have done. Okay, thank you, ma'am. That I have done. So if we talk about the rights, then we must understand that the right to communication is most important for all of us. And you know that people with cerebral palsy often have speech impairment. They cannot form speech easily. Sometimes they speak and it's garbled speech. So they have complex communication needs. So communication is basically what we use to plan, to participate, to share, to intervene, to express emotions and feelings, to question, to dream. In short, to do all that is most human. सबसे जो जरूरी चीजें होते हैं मानव जीवन के लिए वो है communication. And augmentative and alternative communication is a term used to describe a broad range of communicative behaviors and methods which support and enhance communication for all who are unable to use speech as their primary mode of communication. जो भी speech नहीं use कर पाते हैं उसके लिए जो कुछ assistive devices, जो कुछ assistive behaviors are used to support them, उसके support करने के लिए और उसको बढ़ावा देने के लिए जो कुछ यूज किया जाता है वही है augmentative and alternative communication. So communication needs are basically to give information, to express feelings, to indicate needs and wants, to express opinions, to greet people, to tease and joke, to accept and refuse, to comment, to answer questions, and to ask questions. All these are, as we all understand, are very crucial for a daily living, to live a quality life as a human being. And we must understand the rights question also in the perspective of UNCRPD. We all know that the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, that is CRPD by United Nations, was adopted by the General Assembly in December 2006. And India signed this convention on the very first day and ratified it without any reservations in October 2007. In this background, actually, Rights of Persons with Disabilities Act 2016 was formulated. It's a big step towards inclusion, and it ensures inclusion and equal participation of children with disabilities in the schooling system. Will also be accorded the highest priority. Children with disabilities will be enabled to fully participate in regular schooling process from the foundational age to higher education. The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 defines inclusive education as a system of education wherein students with or without disabilities learn together. This is very important. In most cases, we see in inclusive schools that children with disabilities they are sitting separately in a separate enclosure. They are doing their work separately. The integration doesn't really happen. But in our act, we say specifically that they must learn together, and the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different types of students with disabilities. You have all heard about National Education Policy 2020, which has been formulated by Government of India and has been put forward to
This in chapter 6.11, it says that in particular, assistive devices and appropriate technology-based tools. Now we come to assistive technology, as well as adequate and language-appropriate teaching learning material, that is TLM, will be made available to help children with disabilities integrate more easily into classrooms and engage with teachers and their peers. So it's again talking about inclusive education. While it is clear that education of all children with disabilities is the responsibility of the state, technology-based solutions will be used for the orientation of parents, caregivers, along with the wide-scale dissemination of learning materials to enable them to actively support their children's learning needs will be accorded priority. So it talks about training of parents, caregivers, teachers. And in chapter 24.1, it again says that NEP 2020 calls for carefully designed and appropriately scaled pilot studies to determine how the benefits of online digital education can be reaped. Also, the existing digital platforms and ongoing ICT-based educational initiatives must be optimized to meet the current and future challenges in providing quality education for all. So I'll have to talk about IICP because otherwise I won't be able to share our experience of work that we have done in IICP with you. IICP is a pioneer organization in India. It's a specialist center for cerebral palsy and neuromotor impairments working since 1974. We are empowering PWD and their families. We are enabling persons with complex communication needs to speak for themselves using AAC in all spectrums of life. And we are working to create an inclusive and barrier-free society. National and international linkages are very important, you know, for all of us to do research and development. So that is also there. I'm sure that Trishla is almost doing all the same things. So we offer services like this. We offer early intervention and family services, school services, adult day center services, respite and residential services, vocational training services, in-house counseling and social work, therapy sessions with hydrotherapy, physiotherapy, ocutherapy, tea packaging training with, it's a sheltered workshop kind of thing, community-based rehabilitation where we go out in the community and work with them. We do lots of training actually for professionals, would-be professionals, doctors, parents, and caregivers. And Ankur Advocacy Group is the advocacy group, rights group, and they continuously work for campaign. Actually, they continuously campaign for the rights of PWD, and they try to enhance awareness among the community. National Resource Center for AAC, NRC AAC, which is lovingly called Roshni and Assistive Technology. This is a center situated in IICP that works with AAC and assistive technology. You can see from the photographs that is the range of our work. Actually, we work mainly with assistive technology and AAC. And what we do actually, we display and demonstrate all AAC and AT resources available for users, parents, trainees, and professionals developed in India. We also cater to the users with complex communication needs and locomotor impairment, such as stroke patients, brain and spinal injury patients, throat cancer patients, persons with autism, learning problems, and multiple disabilities. We are committed to spread the light of knowledge through actively involving persons who need augmentative and alternative communication, research and development, and training. These are the services we offer. Assessment of individual needs, obviously, providing customized solutions with help of low-tech and high-tech resources for users with technological support, training for the professionals, users, and families. We also disseminate a range of resource material in Hindi, English, and Bengali developed by IICP. We plan customized need-based training for the target groups. So for professionals and for parents, if there are specific target groups, we organize need-based training for them. Providing solutions for inclusion in school and workplace for users, schools, and employers. Research and development of low-tech and high-tech resources in the form of various multimedia software, alternative access options, communication hardware, voice output devices, training and teaching material, and field testing of devices and software with suggestions for modifications. Now I will talk about all these points one by one. But before I start, I must state that our strength lies in the active involvement of users and families in research and development and training.
we also collaborate with technical institutes like IITs and manufacturers like Invention Lab for research and development. I think that, ma'am, if you can cover up to this, then I'll go forward with the next slides. Is that okay, ma'am? Hello, ma'am. Do you need Hindi translation for all this? As Dr. Jain suggests. You can go for brief, just have a brief about all those things. Okay. Okay. So should I go back with the slides? Yeah, ma'am, because I don't remember all this. Naturally. Yeah, I think from here. जो मैडम बता रही हैं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन है जो पीपल विद डिसेबिलिटीज के लिए, मतलब जो इंटरनेशनली जो चीज़ जो रूल्स हैं जो आपको जानने चाहिए, तो ये दिसंबर में 20 आई थिंक आई कैन नॉट सी इट, 2006 दिसंबर 2006 इंडिया ने इसको कन्वेंशन को साइन किया था और उसके बाद 2007 में इसको रेटिफाइड किया गया और इसको अडॉप्ट किया गया। तो हमारी जो गवर्नमेंट है उसने राइट फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016 जो एक्ट है, इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्पेशल इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करी गई है और इस इंक्लूसिव एजुकेशन के तहत जो भी हमारे बच्चे हैं वो फुल्ली पार्टिसिपेट कर सकते हैं रेगुलर स्कूलिंग प्रोसेस में, और स्कूल्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको वो सारी सुविधाएं प्रोवाइड करें। ये गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन है और मैं अपने पेरेंट्स को बताना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स फेस करते हैं ये प्रॉब्लम्स। तो आप लोगों को ये जानना चाहिए कि नो स्कूल कैन डिनाई योर एडमिशन, आपके एडमिशन उनको ये रखना चाहिए अपने पास कि आपका बच्चा अगर है उसको प्रॉब्लम तो उसको वो सुविधाएं प्रोवाइड करें। ये गवर्नमेंट की तरफ से रिकमेंडेशन है कि जो रेगुलर स्कूल है, नॉर्मल स्कूल है, उनमें आपका बच्चा पढ़ सकता है। और यही चीज जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी गवर्नमेंट की, उसने इन्हीं चीजों को अडॉप्ट करते हुए अपने उसमें रेकमेंड किया है कि जो भी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज हैं वो जो सारे जो स्कूल्स हैं उनको वो सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहिए। ऐसे मटेरियल्स होने चाहिए जो कि चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को अवेलेबल कराए जाएं, क्लासरूम और टीचर्स और उनके साथ ये सारी चीज़ों का यूज़ हो सके। और इसी तरह से इसको डिज़ाइन किया गया है कि मतलब जो बच्चे हैं उसको ये सारी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड कराना अगर उसके लिए है तो वो स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट मैम, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सेरेब्रल पाल्सी है ये 1974 से काम कर रहा है इनके बारे में। तो इनके बारे में हम लोग कुछ आगे की स्लाइड्स में देखेंगे कि क्या काम कर रहे हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो कि IICP कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ यूजिंग असिस्टिव टेक्नोलॉजीज को यूज करके बच्चों को पढ़ाने के लिए और उनके वोकेशनल एक्टिविटीज के लिए काम कर रहा है। हाइड्रोथेरेपी है और स्पेशल एजुकेशन है, कुछ वोकेशनल एक्टिविटीज हैं। तो ये फोटोग्राफ्स में हम देख सकते हैं। ये एक रोशनी प्रोजेक्ट है जिसके तहत काफ़ी असिस्टिव टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया जा रहा है। बेसिकली हम इसमें ये देख सकते हैं कि जिन बच्चों को हैंड फंक्शन की भी प्रॉब्लम है तो किस तरह की डिवाइसेस अवेलेबल हैं, माउस हैं और इस तरह के कीबोर्ड्स हैं जिससे कि बच्चे कंप्यूटर्स को ऑपरेट करके काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। तो ये रोशनी प्रोजेक्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसमें कि इनका ये कहना है कि असिस्टिव टेक्नोलॉजी के जो रिसोर्सेज हैं उनको पेरेंट्स और यूजर्स को अवेलेबल कराना ही इनका जो है ऑब्जेक्टिव है। और जो रोशनी है ये जैसा कि नाम रोशनी है, लाइट रोशनी का मतलब होता है, तो उसको एक्टिवली इन पर्सन्स को, लोगों को इन्वॉल्व करना है, रिसर्च करना है और उनकी ट्रेनिंग करना है।
जो सर्विसेज दे रहे हैं ये, उसमें है कि ये लोगों का असेसमेंट कर रहे हैं, उनको उनकी नीड के अकॉर्डिंग कस्टमाइज सोल्यूशन देना है और प्रोफेशनल्स की ट्रेनिंग करना है। ये सारे काम ये कर रहे हैं। इसके अलावा रिसर्च डिफरेंट फील्ड्स में कर रहे हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, ऑल्टरनेटिव एक्सेस ऑप्शन, और कैसे कम्युनिकेशन किया जाए, ट्रेनिंग कैसे की जाए, वॉइस इनपुट कैसे किया जाए, इसके बारे में है। जी मैम। So now let us come to intervention. We have learned what assistive technology is, but how to plan intervention program with assistive technology. Firstly, obviously, we'll have to assess the present situation. We'll have to find out the prerequisite skills. And when you do assessment of present situation, we consider everything, starting from sitting, vision, hearing, whatever physical limitations are there. So everything is to be assessed, and goals should be achievable and lessons should be enjoyable. Strategy is learning in steps, micro modules. So using that strategy, we'll have to plan assistive technology intervention. If at the very beginning, if the child feels that this is very difficult, the child won't be interested in using that technology. So it has to be introduced slowly. It has to be introduced in an interesting way. Camp, social service, and my area, నేను డ్రమ్స్ వాయించిన తర్వాత మా హీరో సినిమా. A team of professionals, including the special educated therapists and the computer professional, should assess the students' abilities and problems regarding vision, hearing, sitting, physical access, cognitive level, which is very important, ongoing programs in the classroom, and depending on this, decision is to be taken. Users' opinion are to be taken into account as and when possible. If the as Dr. Jain also said, that in many cases we find that the cognitive abilities of our CP beneficiaries or CP users is fine, and they can opine, actually they can say what they want and what they do not want. So that has to be taken into account. So decisions made after the assessment need to be reassessed at regular intervals, taking into account the students' physical and cognitive changes. I'll show you some photographs from assessment. These are assessment photographs. As you can see, this is the first one is assessment being done. The second one is also assessment being done. And the third one is the child, actually, you can see the child is using a switch with her head and is typing on the computer. So as we understand that access is very crucial. How to access what is available, how to access that. How to access the, if I want to work on the computer, how to access the keyboard, how to access the type, how to access the typing software. So that, there can be two access options. One is direct access through keyboard. It can be with or without adaptation. We have to see whether a key guard is needed. You can see on the top photo, you can see the keyboard is there, and on top of that there is a plastic shield with little holes in it. So to guide finger in the right keyholes, this structure is used, or a pointer, a stick is needed. So that has to be found out. Accessibility options in Windows to be activated to facilitate single finger typing. This is something very useful. We all use Windows and we all know that there are all these access options. So you can actually configure them. You can actually make them work in a way so that you can work with a single key. You know that if I want to type, say, the $sign or the %sign, you will have to hold the shift key and then press the number 5, that is the %sign. Then the %sign will come. But for a person who can use only one finger or uses a pointer, cannot use the shift and that number key together, or shift and some other key together. So to make the effect of shift stay with you, you can use this sticky key option. And there is another debounce delay, I'll talk about it. So these options can be activated in Windows effectively so that the child can use all the keys without any disturbance. Special keyboards like extended keyboard, the next photo you can see, this is an extended color coded keyboard. It's very easy to remember what you can see. All these QWERTY things are, the alphabets are in green, the special keys are in, the numbers are in red, the special keys are in yellow.
and the action keys are in blue. So it's very easy to remember. There are IntelliKeys keys. The next photo is about IntelliKeys keys, where it's a flat surface and it can be programmed actually. Maybe the child has learned only A, B, C, D, E, F, G. Up to that, the child has learned. So you can program the keyboard in a way that only these alphabets are there. The other alphabets are not there. So the child learns easily, slowly, in step-by-step method. We all know that access to the mouse is a big problem. When we start, people who do not have any disabilities, who do not have any access problems, always find using mouse a bit difficult. The one great difficulty is that to select something, you will have to hold the shift key, or we'll have to, this left button has to be clicked, and then the mouse has to be dragged actually. You'll have to drag the mouse to select the section that you want to select. And that is quite difficult for a person with disability. So if the person cannot use a normal mouse, then a rollerball mouse like this can be used, or a joystick mouse. This is a large ball actually. It's very easy. I'll show you a video. It's very easy to roll the mouse ball. The mouse ball is under your control. So you roll the mouse slowly, the ball slowly, to select and to drag. And this red switch over there is this switch. This switch over there is the drag lock. So you press the switch and then you press this left button, and it will be the dragging thing will be locked. So you move the mouse, the ball only. You don't have to press any of these switches. You move the ball only and it will be selected. It will be highlighted. The right click is right there. It can, here actually a guard has been used, but it can be used without a guard. The other option is indirect access. Here the software provides multiple options to be scanned. The right choice can be selected by clicking specially designed switches connected to a hardware interface in the USB port of the computer. So as you can see, these are the buttons. These are the buttons. These are displayed on the computer screen. Or here you can see the alphabets are displayed on the computer screen. And these are scanned one by one. The light bar goes from, it's a light bar, like highlight bar kind of thing. It goes from one point to the next point. And when you want to select one of these icons, then you press, when that icon is highlighted, you press the switch and it will be written in this writing area. For these actually specially designed software and hardware interfaces are necessary. You can see the hardware interface here. It's a USB interface. You'll have to point it, you'll have to connect it to the USB, and these holes are there. These holes are for switches. Windows accessibility options I have already talked about. These are sticky keys, debounce, delay, and drag lock for mouse. Here you can see a person using a head pointer for typing. Someone who cannot use her hands or her feet or any other limbs has only head control. Can move her head quite well, has good control over her head movement. So she is using a pointer, a stick-like thing, which is attached with Velcro on her forehead. As you can see, it's tied around her forehead, and she is using this for typing. She's taking a class actually. She's one of the trainers. So for most of our kids, children with cerebral palsy, people with cerebral palsy, adults with cerebral palsy, the scenario is most often that the mouse is unplugged and the keyboard is unplugged. The person cannot use the mouse, the regular mouse, and the person cannot use the regular keyboard. So what special access mechanisms are required to actually removing this keyboard and this mouse? What other access can be provided? These are low-cost electromechanical press switches. As you can see there, I'm showing you the circuit. These are the switches here. These are the switches. These are to be pressed. And this is the adapter, which is connected with the computer. And this is connected with this. This is a touchpad switch.
I must show you this. This is something very useful and very easy to make actually. If you want to design this, this is something very easy to design. It's a regular mouse. It's a regular mouse, as you can see. We have made 2 holes actually at the sides. And this is one switch which is attached to the left button of the mouse. This is another key, another switch which is attached to the right button of the mouse. So the mouse actually is not active. It's a USB mouse, as you can see. The mouse is not being operated, but the switches are being operated. And if you provide a ball, then most of this can be done, most of the operations can be done with the left click and right click of the mouse. And you can actually work with the mouse using these 2 switches. This is a blow switch. Somebody who can use, who can blow actually into something, has that control, can use this switch to operate a mouse. I will show you Aditi. It's a sensor-based switch. You do not have to touch it. If you move your hand or feet or any other limb on top of these 2 sensors, it will sense that movement and will move accordingly. The mouse will move accordingly. So as we understand that there are different types of switches, different kind of switches depending upon the user's physical abilities, one has to select the right kind of switch. A student pressing the switch with his forehead or cheek will need a soft padded switch, because otherwise the person will get hurt. It will be very hard, and going on, if the person goes on pressing on it, then the child, then the user may hurt himself. So that person will need a soft padded switch. A hard, heavy switch will be needed if placed by fist or feet. You can see a big switch. A student who can exert very little pressure will need a micro light switch. Any voluntary movement that the student can repeat confidently can be used to press a switch. That is like eye blink switch. Commercially available switches are mostly imported. Now I have to talk about this a little. How to select a switch? We have to see what movement is there, what voluntary movement is there that the student can repeat confidently. So if the child can press a switch with his fist, can he repeat that pressing movement again and again voluntarily, and can withdraw from the switch voluntarily? So depending on that, the switch has to be selected. I am showing you a photograph of the eye blink switch. When there is a person who cannot move any of his limbs at all, any of his limbs, then this person can use this eye blink switch. It's a sensor based switch. Here is a sensor there. A sensor is there, and this eye blink, actually this switch is fixed with the glasses, and there's no glass. Obviously the glass is not there. The switch is fixed with the frame of the glass, and the person can actually operate the switch with voluntary eye blinks. So when the person closes his eyes, the switch is being clicked, and when he opens the eye, then the switch is not clicked. This is something, as I have said, this is something very good, actually very simple adaptation. I'm showing you how the whole is made and how it is connected. Any multimedia storybooks, any PowerPoint stories, photo albums, slides can be used with this adaptation. I'm showing you a video of using trackball mouse. You can see this child has limited hand function. He's using an extended keyboard and a trackball mouse. He's locking the key, and now he is moving the trackball. Now he'll release the key. He's releasing the drag and again moving it. And then he goes back to typing. Here is another student, Shukomol, who uses a switch to write with pictures. I must tell you that it's not necessary that everybody has to be a reader, speller, someone who can write in a specific language, say in English. No, not necessary. The user can use any language, can be of any cognitive level,
and can use assistive technology actually Shukumal to Das work. has cerebral palsy and speech impairment. He uses his elbow to press a switch to write on the computer. He uses a special communication software with picture symbols called Gupshup. Here you can see the child is using a software where he can write with picture symbols. He is a non-reader. He cannot read or write alphabets. He doesn't understand alphabets, but he understands pictures very well. So he is writing with picture symbols. And when he writes with picture symbols, it gets automatically translated into alphabets. I mean, into sentences, proper sentences. So I'm showing you again different kinds of switches and how it's being used. You can see a child who is using the switch with his chin. Yes, ma'am. Yeah. Can we go back, ma'am, for the slides? एक्चुअली मैम ने जो हमें बताया है ये बहुत ही बढ़िया डिवाइसेस हैं एंड आई थिंक मैम ये सारी आपके ऑर्गेनाइजेशंस में काफ़ी कुछ डेवलप किया गया है इनको। तो आप लोगों ने देखा कि ये जो बच्चे हैं जो भी जिनके हैंड फंक्शन में प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है, ये किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि ये आपको दिखाया जा रहा है कि एक नॉर्मल कीबोर्ड और माउस है, इसको अनप्लग कर दिया गया है और उसके बाद बच्चे के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग कितनी सारी तरह की डिवाइसेस डेवलप करी गई हैं। आई थिंक कि मैं कोशिश करूंगी कि थोड़ा सा बताऊं, लेकिन मैम की तरह मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैंने देखी नहीं है ये डिवाइसेस, लेकिन बहुत ही अच्छी तरह की डिवाइसेस हैं। ये टच पैड स्विच है जिसमें कि केवल छूने से आप, मतलब जो एक ये चीज़ है कि जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो ये जानते हैं कि इन बच्चों की काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव इश्यूज भी होते हैं और कई बार बहुत कस के माउस को और कीबोर्ड्स को प्रेस करते हैं या उनके इनवॉलंटरी मूवमेंट होते हैं तो वो कहीं भी होता है सकते हैं जी। तो उसके अकॉर्डिंग इनको अडाप्ट किए गए हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए हैं, डेवलप किए गए हैं। तो ये स्विच है जिसको कि केवल टच करके यूज कर सकते हैं और इसके आगे और बहुत सारे, ये अगर आप देख रहे हैं कि इसमें एक जो माउस है, इस माउस के साथ लेफ्ट और राइट बटन के लिए अलग से एक मैकेनिज्म लगाया गया है। तो उस छोटे माउस को बच्चा नहीं हैंडल कर सकता है, बट डेफिनेटली अलग अलग उसके लिए इनको ये हैंडल करके और उस पर प्रेस करके बच्चा हैंडल कर सकता है। ये एक बहुत ही अच्छी डिवाइस है। एक जो ये आप अदिति करके देख रहे हैं, चेन्नई IIT का है। हाँ, ये केवल देख करके, जो मैंने समझा था कि इसको केवल देख करके आई के मूवमेंट्स जो होते हैं उसको कैच करके भी ये और माउस को ये इंडिकेट करता है कि कैसे करना है। दैट इज अ वंडरफुल थिंग ये जो कि डेवलप करी गई है। और ये जो दिखाया गया है इसमें जो चीज समझ में आ रही है कि जो ये एक्सेस कीपैड्स हैं या माउस हैं या जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनको भी कितना प्रेशर डालना है बच्चे को और कौन से किस तरह का प्रॉब्लम है किस बच्चे की, उसके अकॉर्डिंग इसको अडाप्ट किया गया है। स्टूडेंट इसमें जो है कि स्विच को, और अगर मान लीजिए कि किसी के हैंड फंक्शन नहीं ठीक है, वो अपना फिस्ट करके मुट्ठी बना करके उसको कर पाता है। ये हम लोग बहुत बारी फील करते हैं क्योंकि हम लोग जब हैंड फंक्शन कराते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हम रेगुलर यूज करते हैं अक्सर करके बहुत जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर उसी को सोल्यूशन निकालने के लिए उसको इस तरह की चीजों को यूज किया गया है कि जिसमें प्रेशर बहुत कम लग रहा है तो उसके लिए वैसे कस्टमाइज किया जाए कि कम से कम प्रेशर में भी वो काम कर सके। जो बहुत तेजी से, जिनमें इनवॉलंटरी मूवमेंट और फोर्सफुल होते हैं, उनके लिए हाई प्रेशर को टॉलरेट कर पाने वाले इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इवन ये हम देख रहे हैं कि चश्मे के साथ एक डिवाइस को अटैच किया गया है जिसको कि आई ब्लिंक, जो बच्चे की आंख बंद या खोल कर रहा है उससे वो अपना सेंसर ले रहा है और अगर आंख बंद करता है तो स्विच आई थिंक ऑफ हो जाता है मैम। और जब आंख खोल रहा है, आंखें बंद करने से स्विच चलता है
आँख खोलने से स्विच बंद हो जाता है। ओके, आँख खोलने से स्विच बंद हो जाता है। तो ये बहुत ही वंडरफुल डिवाइसेस हैं, क्योंकि मतलब कि आप ये तो सोच ही नहीं सकते। एक चीज और मैम यहाँ पर मैं ऐड करना चाहूंगी कि जो लोगों को ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि सेरेब्रल पाल्सी के बच्चे मतलब उनको मेंटल रिटार्डेशन बहुत कम परसेंटेज होते हैं, 20 to 30%। तो बाकियों को अगर हम इस तरह की जो डिवाइसेस हैं जो आप देख रहे हैं, बच्चों को उनके नीड के अकॉर्डिंग हैं, अगर हम उनको अडाप्ट करके और उसके कस्टमाइज करके उस बच्चे के अकॉर्डिंग, उस पर्सन के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोवाइड कर सके, तो वो काफी कुछ अपना कर सकते हैं काम। और पढ़ना लिखना, अपना कंप्यूटर अगर आपको चलाना आ गया तो फिर तो दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं आज के समय में। तो ये काफी अच्छी डिवाइसेस हैं। बस आपको करना ये है कि कोशिश करना है कि अपने बच्चे के लिए उसके नीड के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग लें, उनको ढूंढे कि कैसे हैं और कैसे हम उनको यूज कर सकते हैं। Thank you, ma'am. जी मैम। Now I'll talk about communication aids. These are, as I said, that communication aids actually range from low tech to high tech again. There are low tech communication displays which are with pictures, words, alphabets. This is just a page, simple paper, and on the top of the paper there are symbols or alphabets, whatever. And there are high tech aids like record and playback voice output devices, computer, tablet, etc. AAC is applicable for all who are in need of it, irrespective of their physical or cognitive abilities, irrespective of languages they use, Hindi, Urdu, Tamil, Bengali, doesn't matter, irrespective of availability or affordability of technology. Technology affordable नहीं है, technology available नहीं है, तो कागज पेंसिल से कीजिए, मगर AAC is very important because a child must express his own needs and demands and his own opinions. This is an object timetable used by children with multiple disabilities. These are children actually who are very young, and they understand only miniature objects. As you can see, miniature objects are there, or they understand the next level, they understand pictures. So with these pictures and miniature objects, we have made routine schedulers. Can be used by low-tech communication displays, can be used by any user irrespective of our cognitive level. So these are in form of starting from a single picture message card to a picture album, topic-based displays with pictures and words or alphabets board. It can be anything. Here you can see there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pictures in a board, and the child is using these pictures to give a message. I'm giving you some examples. These are the picture flashcards actually. Like I went out with Ma, the photograph is there and the message is there. I want to play with the doll playing photograph is there and the message is there. If the child points to the picture, the child understands the photograph. So if the child points to the photograph, this message is conveyed. There are many of our children actually who do not understand alphabets and understand symbols, AAC symbols. To participate in communicative activities, to understand what other people are saying and to express themselves, these AAC symbols are very important. And as I said before, these must be culturally relevant. They must be able to express our cultural activities, our cultural food, whatever we are associated with in day-to-day life. So AAC symbols must relate to the environment of the persons interacting. These are low-tech communication displays. They're versatile, they're non-expensive, very easy to use. It's only pen and paper, as I said. As you can see here, there are lots of pictures and the words are there. Words are for a person who is reading. If the child starts with the pictures, the child will soon graduate to the words. The child will first start with the pictures, and then the child will understand that this is me, and this is I. So the person will start reading that I. The person will understand the next picture is good, the picture, and then the person will understand the word. This is a Hindi communication display. It's language based. You can see all these matras there. All these matras are there. There are phrases. So this is language based communication board.
I'll share a video where a picture display is being used to give messages. So you see the child's speech is not clear at all. दोस्तों से बात करना बहुत अच्छा लगता है. अप्सरा, तुम्हें हमें मोती का हार बनाना अच्छा लगता है. So you can see that the child actually is combining more than one symbols together to form a sentence, to form a message. And the child has that cognitive ability to understand pictures and to form a sentence with combination of pictures. But the child hasn't yet been able to read actually the words. But here is a child who can read and write. और एक बार पढ़ो. नहीं. हाँ, हीरा सबसे कठिन पदार्थ है. कठोर. कठोर पदार्थ है. हमें छोटी छोटी So you can see that the child is pointing to the letters, actually the alphabets, to form. He's doing a fill in the blanks thing. So he's forming the words actually by spelling with these alphabets written on a piece of paper. But if the child cannot use his hand, if the child is unable to use her hand or unable to use his hand to point to these letters, to point to these pictures, then what will happen? This is a access device. Actually, their assistive technology comes here. So this is an access device. It's a regular glass with a regular frame, and a sensor is, you can see the sensor here. A small sensor has been attached to this frame. The child, if the child can move her head, then the child can point that laser pointer with that laser pointer light, with that laser light, the child can point to the alphabets or the pictures and can form a message. You have already seen lots of picture symbols here, but you must wonder that how these picture symbols are all there and who have developed these picture symbols and how they are there. So actually, Indian Picture Symbols of Communication is a library of culturally and linguistically appropriate digitized picture icons and a software to navigate this library of 1900 symbols to make communication displays. A range of pre-made grids are available. Through customized grids can also be made. As you can see, you can place, actually, the thing is that you can place as many pictures in a page as you require. An easy search facility is there. You can search whatever, like here, all records are being searched. As you can see, there are naming words, people words, phrases, position words, question words, and you can search accordingly, and you can choose your symbol. And this is a single click is required to paste picture icons in the
like this. This mother comes, and if you click on this mother will be pasted here. And this is the picture symbol that is there, and text can be incorporated in any language. Whatever language is there, in whatever font is there in your, now with Google Docs, you can type in any language. So you can type in that language you require, and you can paste the words on top of the pictures. Picture icons can be merged to form phrases, and new vocabulary, new pictures can be added. This is a software, you have seen Shukomol using this software. This is a software where one can write with picture symbols, and there is a voice attached also. So if I say, here you can see this birthday thing. So if I click on birthday, then this birthday will be written over there. Birthday will be written over there, and you can hear the sound, you can hear the audio, happy birthday. So there is a voice output, and the software provides scanning options, alternative access with switches, as you have already seen. This is a software where IPSC database has been used to form develop a software named develop a software in collaboration with IIT KGP. It's called Sanjog, where again the symbols are there, the picture symbols are there, and you can select the picture symbols. You can select the picture symbols, and a sentence is formed, and then the sentence will have a voice output. This is available in Hindi, English, and Bengali. There are all these interfaces of this software. You can select whether you will need one switch or two switches. You can select you want a faster speed or a slower speed. You can have iconic communication interface like this. You can have stored messages, and you can have keyboard. The keyboard visual keypad interface is like this. It has got text to speech and intelligent word prediction. Text to speech, you understand, when I type Mera, it will say Mera. You can see here that No has been selected already, and all these words have come up which start with No. I'll again show you a video. This has been written by the student. This is the interface is like, but as you can see from the video, I wanted to share this video with you just to show that how much patience and how much waiting is needed to press a key. You'll have to wait for the right icon to come up. You have to wait for the right icon to come up. It will go like this, and then it will come to No, and then only you have to press the switch. So you'll have to really wait patiently, and then you'll have to press. So the child must have that cognitive ability and the level of intelligence to understand that the child has to wait. Otherwise, the child can use two switches, where one switch can be used to press and move actually forward from Ka to Ga to Gha, and then going row wise and column wise. Voice output devices are easier. These devices can be used by a broad range of users of varied cognitive abilities, and can be used successfully not only as AAC devices but also as teaching tools. These are devices where, as you can see, this is a little album, and in each page of this album there is a storage unit where you can store a message. A picture is there. This is a picture of a house, and the child may say something about the house. The child may say, "Mujhe ghar jana hai." So that message has to be stored here, and when the child presses this switch, little switch here, this message is being given. This is Kathamala. There are, as you can see, there are 16 messages, 16 locations. Each of these location can store one message. And then the top
sheet can be made with words or made with pictures, and the child can press any of these switches to give out a message. Obviously, language independent. In whatever language you want to record, you can record. I'll show you this small boy. Thank you. So this is what a voice output device does. Now I'll tell you about tablets and apps. You know that all these tablet PCs, tabs and phones also, smartphones also, they are becoming more and more easily available for all of us. And there are lots of apps actually available which are very good, which work with these tabs and which work with smartphones also. And using these special apps, one can actually talk, one can actually express themselves very easily. And as you can understand, when there is an audio message, a message in using a voice recording, it's much easier for the listener actually to react to it. In most cases, we find that people who cannot speak are being ignored because they have no audio message to be given. So if this audio recording is there, then it's much easier for the person to react. Here you can see. Where do you come from? So this is an app actually. I'll tell you about this apps. This is an app called Kavi PTS developed by IIT Chennai. You can write to IIT Chennai to use this app. This is for smartphones and for tablets. You can see here there are all these collections of picture symbols. And if you go into one of these, you will find symbols like this. You can easily make also displays as you wish. So this is hi, hello, nice to meet you, I'm fine, thank you, I want to go somewhere, and sorry, I need help. So these are the symbols, those have been used here, but you can make displays as you wish. Whatever symbols you want to use, you can use. This is again another called Jello communicator. This has been developed by IIT Mumbai, IIT Bombay, and again the same kind of thing. There are all these categories: greet and feel, daily activities, eating, people, learning, fun. There are places, time and weather, and help. And there are few things which are very important, like I'm happy, I'm not feeling good, this is right, this is okay, this is not okay with me, and I want to go forward, I want to go back. Akashvani is again another app for tablets, and as you can see, this can be accessed with switches also. So if some person cannot use this flat surface of the tab, finds it difficult, and because of hand movements actually, the child actually wants to press somewhere here and goes all over the place, can use a switch to access this. So you can actually, what happens is, this is Akashvani. This has been developed by SNLTR and IIT KGP. You can see here, I'll show you a video. You can see here that the child, the
picture icons are being scanned and the child can press anywhere on the tab when the picture icon is highlighted. It's being asked which is a healthy food. Healthy खाना कौन है? Sandwich, आलू, फुचका. Now sandwich is being highlighted. It's coming. The child is waiting and presses. And he says sandwich. This is again another very important software. It's called Sweepstakes. It's accessing the entire desktop with switches. You can see here you have already seen you can adapt the mouse with 2 switches. So when you use these 2 sticks that you can see on the screen, these 2 sticks move anti-clockwise or clockwise according to your wish. So the 2 sticks starts moving, and when you press the switch, it stops. So it stops here, and then you can go pressing another switch. You can go up there, like go, and press on this icon there, and that icon opens up. You all know that for our children with cerebral palsy, it's very difficult to access websites. Websites are very difficult to access because you'll have to operate your mouse to go to the website, to click and open it, and again to browse it. When you come down, scroll up, that becomes very difficult. If the child cannot use a keyboard or the mouse, it becomes very difficult. This is a software where navigation of website has been made easier with switches. You can see that a number keypad is there. When you open the Google screen, it assigns numbers actually to each and every highlighted, each and every marked things. So then you can select the number from here with a switch. Like I select say 5, and then number 5 will open. You can move back, you can go forward, you can go back, you can take, you can show 5 links, you can go to a specific link, you can go to the home page, you can scroll up, scroll down. So all this can be done using switches only. It helps accessing web contents by people with neuromotor disorders, intelligent scanning mechanism to access and navigate web contents, and provides icon-based query augmentation scheme, and multilingual predictive virtual keyboard. This has been developed by NIT Durgapur in 2019. It's one of the latest developments. You can see here 25 is being selected. So the number 25 link will open up. This is again a software hardware system. It scans through a selection of letters. All these letters with a little, you can see this little light here. The light moves and selects a letter, and the letters will be written over here. I must also tell you that at this new normal situation, now we have this online thing has been a very crucial thing in our life, actually very important thing in our life. I can talk to you online, and so we are actually offering services online now. We are conducting online training for professionals and families, and we are also doing online assessment and consultation for users and families. I have come to the end of my presentation. As I have shared my experience, I think it's very clear to all of you that a person-centered approach for assessment and choice of assistive technology and ASC can only make this dream come true. An inclusive society is possible only when a person-centered approach, deciding what is required for whom, that is most important, and how that person will use whatever is being given to him is crucial, actually is most important to make inclusion a possible dream.
I'll acknowledge IICP users and families. Dr. Sudha Kaul, Vice Chairperson of IICP. Krishnarupa Chaudhuri, Head of IT IICP. Madhumita Dasgupta, Coordinator IT IICP. And Kaushik Hafizi, Trainer IT IICP, who has made all these wonderful videos for me. If you need anything, if you need to share my slides, you can write to me, you can mail to me, and I'll definitely give you permission to share the slides. But you can understand that videos are very difficult. You need parents' permissions and permission from the users actually to share videos. But the other slides I can always share with you. Please don't share without permission. Thank you. Thank you so much. Namaskar. Ma'am, can we go a little, a little faster for these communication devices also? Yes. So that our Hindi speaking and understanding people also can understand. Yes, I will try to go very quickly. I'm going back. I think it was even before. I think I'll have to start from here. Okay. Yeah. I have to start from here. Many of them are there. ये जो स्लाइड्स हैं इनमें काफ़ी डिटेल में मैडम ने बताया, जैसे कि हमारा एक तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का जो शुरू में बात करी थी, इसका मतलब केवल चलने फिरने में नहीं होता है। जो पहला पोर्शन था उसमें मैडम ने बताया कि एजुकेशन के लिए और कंप्यूटर यूज़ करने के लिए हमने कैसे कैसे एडाप्टेशंस किए हैं और क्या क्या चीज़ों की अवेलेबिलिटी है जिससे बच्चा कंप्यूटर के थ्रू अपनी एजुकेशन ले सकता है। अब जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, कि एक दूसरे जो बच्चे अगर स्पीच की प्रॉब्लम है या मोटर प्रॉब्लम है या कुछ और इस तरह की प्रॉब्लम है, अपनी बात सुनने की प्रॉब्लम है, इन सारे प्रॉब्लम्स वाले बच्चे अपनी बात कैसे पहुंचाएं, क्योंकि कम्युनिकेशन के बिना तो सारी चीजें ही रुक जाती हैं। तो उसके लिए बहुत ही सारी अच्छी टेक्नोलॉजीज हैं, बिल्कुल लो टेक्नोलॉजी से लेकर के और हाई टेक्नोलॉजी तक सब कुछ आप अपना मतलब वो करके और कर सकते हैं। काफी चीजें ऐसी हैं, जैसे इसमें है पिक्चर्स हैं, तो वो पिक्चर्स को बच्चा इंडिकेट आप करने का सिखा सकते हैं और वो अपनी नीड उसके थ्रू कम्युनिकेट कर सकता है। जो चीज चाहिए उसको, जैसे कोई अगर पहला है खाना है तो खाने का सिंबल बना दिया, मैं हूं तो मैं कहने का सिंबल बना दिया, और ऐसे कर करके बच्चा ये बता सकता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। नेक्स्ट मैम, अगर हम लोग जाएं तो इसमें जैसे कि कम्युनिकेशन के बोर्ड भी आप बना सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में, और ये अवेलेबल भी हैं, ऐसी बुक्स हैं। तो इनके थ्रू आप एक छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं या जो शब्द हैं उनको बच्चा इंडिकेट करके मिला करके अपने पूरे सेंटेंसेस बता सकता है कि वो क्या कहना चाहता है। It's very good for learning also. When you're teaching how to make sentences, how to develop sentences, this is very good for language teaching as well. सीखने के लिए भी मैडम कह रही है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टूल है कि कोई बच्चा अगर सीखना चाहता है, जब शुरुआत में आप उसको पढ़ना लिखना सिखा रहे हैं लेकिन स्पीच नहीं है, तो इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं। इसमें एक बच्ची की फोटोग्राफ दिखाई गई है, जो कि मैडम ने जैसे वीडियो में दिखाया था पहले, आप लोगों ने देखा होगा कि वो पिक्चर्स को यूज कर करके और अपनी पूरी कम्युनिकेशन, अपनी पूरी बात बता दे रही है कि ये मैं हूँ, मेरे को गले में मोती का हार अच्छा लगता है, तो उसने अच्छे के लिए अलग, मैं के लिए अलग, हार के लिए अलग सिंबल यूज किए और इससे करके पूरा सेंटेंस बन गया। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप होता है जो कि बड़ा दुखदाई हो जाता है, वो बहुत ही अच्छे से ब्यूटीफुली इन सारी चीजों से, डिवाइसेस से, बड़ी सिंपल डिवाइसेस हैं जिनसे कि हम कर सकते हैं। इसके आगे भी और है, ये है जो इसके पहले वाला जो था उसमें बच्ची लैंग्वेज या अक्षर नहीं पहचान पा रही थी, केवल सिंबल यूज कर रही थी। जो इसमें है ये बच्चा एक्चुअली में पढ़ रहा है, ये अक्षरों को पहचान रहा है और किसी क्वेश्चन के आंसर में वो अपना जो आंसर करना चाहता है तो इन अक्षरों को मिला मिला के वो इंडिकेट करता है कि ये हो सकता है और उसको पूरा मिला करके उसका आंसर बन जाता है। तो एक्चुअली में बच्चा बात कर रहा है, बता रहा है, क्वेश्चन के आंसर दे रहा है। दैट इज वंडरफुल, बहुत ही अच्छी चीजें हैं ये, जिसको कि हम थोड़ा सा भी कॉमन सेंस यूज करें अगर पेरेंट्स, तो बहुत अच्छे से अपने बच्चे को शुरू से एजुकेशन और ये सारी चीजें सिखा सकते हैं, जिससे कि बच्चे अदरवाइज कटे रहते हैं।
और ये जैसे कि चश्मा है, चश्मे के ऊपर सेंसर लगा हुआ है, अगर बच्चा हाथ बिल्कुल नहीं यूज कर पा रहा है तो वो अपना चेहरा, अपना चश्मा घुमा करके, जो ये पॉइंटर है, ये पॉइंटर उन अक्षरों के वो पॉइंट कर सकते हैं और उससे मिला करके हम समझ सकते हैं कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। और अब एक जैसे ये है, एक डिवाइस डेवलप करी गई है जो कि इंडियन पिक्चर है, जिसमें कि सिंबल है कम्युनिकेशन के, जो हमारे इंडियन सर्कमस्टेंसेस में क्या क्या चीजें हो सकती हैं उसके अकॉर्डिंग डेवलप किया गया है। और ये सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं मैडम के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या IICP है, इनके थ्रू हम इनको वो कर सकते हैं। तो इसमें जैसे कि ये सिंबल्स हैं, कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है, ये सिंबल को अगर क्लिक करेंगे तो ऊपर की लाइन में फिगर्स आ जाएंगे एक एक करके, और इस तरह से कई फिगर मिला करके पूरा सेंटेंस बन जाएगा और बच्चा उसको कम्युनिकेट कर सकता है। अगर गड़बड़ हो गया तो उसको डिलीट करने का भी ऑप्शन है। तो इस तरह से काफी सारी चीजें जो हैं आप थ्रू कंप्यूटर कर सकते हैं। ये गपशप सॉफ्टवेयर है और इस तरह के कई सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जिनमें कि आप कई पिक्चर्स को मिला करके एक पूरा सेंटेंस भी बना सकते हैं और उस तरह के मैसेजेस को कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एक ये संयोग करके कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि 3 लैंग्वेजेस में है, हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में, और इससे कंप्यूटर के थ्रू पूरे की पूरा कम्युनिकेशन हो सकता है सिंबल के थ्रू। ये बहुत ही अच्छी चीजें हैं जिससे कि बच्चा देखिए कितना खुश है क्योंकि अपनी बात कह पा रहा है, क्योंकि इनकी बहुत सारी चीजें, आधी समस्या तो इसीलिए हो जाती है क्योंकि अपनी बात को कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। ये वर्षा है, वर्षा इज अ पोएट आल्सो and she has passed her secondary school level exams and she has used this software to write all her answers. बहुत अच्छी बात है जो मैडम बता रही है कि ये जो बच्ची है अप्सरा, इसने अपने सेकेंडरी लेवल का एग्जामिनेशन एक्चुअली में पास किया है। केवल कम्युनिकेट करना नहीं, केवल यही सॉफ्टवेयर को यूज कर करके लिख करके आंसर दे करके पूरा एग्जाम पास किया है। बहुत ही, दैट इज वंडरफुल। मतलब क्या क्या हो सकता है, ये हमारे पेरेंट्स को इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, अगर जो कहते हैं कहावत है कि जहां चाह वहां राह है, तो वही राह ये है। जी मैम। और ये एक इसी संयोग के अलग अलग तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं और इसमें एक्चुअली पूरे अल्फाबेट्स हैं जिनको कि एक एक करके क्लिक करके पूरा का पूरा शब्द और पूरा का पूरा सेंटेंस टाइप हो जाता है। और जैसे ना बच्चे ने यहाँ पे टाइप किया तो नीचे उसके लिए ऑप्शंस भी आ गए, उसमें से एक क्लिक करके फट से वो शब्द इसमें आ जाएगा और पूरा सेंटेंस वाक्य बन जाएगा और बच्ची अपनी बात बच्चा बता सकता है, जो कि ये सारे इंडिया के डेवलप किए हुए सॉफ्टवेयर्स हैं। जी मैम, नेक्स्ट इसमें और भी कुछ अच्छा था। जैसे ये बच्ची है, इसका भी दिखाया था मैडम ने। ये सारे डिवाइसेस हैं, कथामाला है, इसमें भी इस तरह के 16 लोकेशंस हैं जिनको कि बच्चा अगर जो चीज कहना चाहता है उसको क्लिक करेगा। और आई थिंक इसमें प्री रिकॉर्डेड स्पीच है मैम, जो क्लिक करना है बच्चा तो वो चीज सेंटेंस है और आप जितना बार चाहे उतना बार स्पीच रिकॉर्ड कर सकते हैं। अच्छा, तो वो स्पीच रिकॉर्ड उतनी बार हो सकती है और फिर वो उसको सुना भी सकते हैं। तो ये बहुत ही, एक जैसे कि इसमें दिखाया था एग्जाम्पल में कि वो बच्चा एक्चुअली दुकानदार से कम्युनिकेट कर रहा है, वो पूछ रहा है और वो उसको बता रहा है कि नहीं मेरे पास इतने नहीं इतने पैसे हैं, मुझे ये चाहिए, और वो कम्युनिकेट कर पाया और वो काम कर पाया। बहुत ही अच्छे तरह की डिवाइसेस हैं ये सब। तो मतलब एक ये टैबलेट है इसी तरह की, अगर आप टैबलेट अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें भी रिकॉर्डेड स्पीच है और इसके थ्रू बच्चे को आंसर जो देना है वो उसको क्लिक करेगा और उसी वॉइस में वो अपने आप से जो भी कहना चाहता है उसको कम्युनिकेट भी करेगा। तो आवाज नाम का ये है। एक ये ऐप है जिसको कि कवि ऐप है, IIT चेन्नई ने डेवलप करा है। इसमें भी सिंबल्स हैं और इन सिंबल्स के थ्रू क्लिक करके ये मोबाइल फोन में ये ऐप्स आते हैं। अगर जिन बच्चों को स्पीच की प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन की है, तो ये मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड करके और इनके थ्रू बच्चों को कम्युनिकेट करना सिखा सकते हैं। ये काफी अच्छी चीज है। और इसी तरह से एक ये जेलो कम्युनिकेटर आता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं इसमें कि किस तरह जेलो इज फ्री। या
Jello is free. So if you have a smartphone or a tablet, you can ask IIT Mumbai for Jello, and they will give it. You just go search for Jello in Google, and they will give you a free demonstration, and you can use it free. ओके ये आईआईटी मुंबई का उसमें है ये जेलो कम्युनिकेटर आपके आईपैड या मोबाइल में हो सकता है और आप उनसे कांटेक्ट करके और उसको उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं कि इसको कैसे यूज करना है। जी, तो ये भी काफी अच्छी चीजें हैं। और ये एक आकाशवाणी करके है, इसमें जैसे देख रहे हैं आप माउस से पहले कीपैड्स अलग अलग राइट और लेफ्ट बटन अटैच थे, उसी तरह से इसमें ये एक मोबाइल ऐप टाइप का है। मोबाइल ऐप है मैम, ये टैबलेट है? ये टैबलेट है, टैबलेट है, तो ये अटैच्ड है और इसके थ्रू भी काफी कुछ आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज है, ये सारी चीजें सीख सकते हैं। जैसे कि एक ये आकाशवाणी करके ऐप है, इसके थ्रू बच्चा पूरा कम्युनिकेट कर रहा है। इससे पूछा गया था कि हेल्दी फूड क्या है, इसको 3 ऑप्शन दिए गए और उसमें पिक्चर था बच्चे की, जहां तक कि बैलेंस भी, सिटिंग बैलेंस भी बहुत थोड़ा सा है, हैंड फंक्शन उसका बहुत ही पुअर है, लेकिन फिर भी वो बच्चा बता पाया, इंडिकेट कर पाया कि वो क्या बताना चाह रहा है। दैट इज वेरी वंडरफुल। इसी तरह से ये एक स्वीप स्टिक्स हैं जो कि कंप्यूटर के स्क्रीन पर आती हैं और इसमें आप जो स्टिक्स हैं इनको स्वीप करके उस पर आ सकते हैं कि हमें क्या कौन सा वाला बटन इसमें यूज करना है। मैम इसके बारे में एक बार और आई थिंक कि आप अगर बताएं तो। These are the 2 sticks actually. These are the 2 sticks that will appear on your screen. And they will move like this. Okay. They will move anti-clockwise or clockwise, whatever you wish. Okay. So they will move, and when you click a switch, it will stop. And this green light will come up. This green stick will come up. Achha. And then you can move another switch. You can click another switch to go on using this stick, and you can reach here and press your switch, and then this folder will open up. ओके ओके, इसमें जैसे ये 2 स्टिक्स हैं, आप इनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं और जब आपने इसको मूव किया तो आप जो फोल्डर चाहते हैं उसके थ्रू तक आया, तब आप रुक करके फिर आप दूसरी स्टिक से उसको क्लिक कर सकते हैं ऊपर तक जा करके और फिर वो आपका ओपन होकर के आपके उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं, अपने स्विचेस को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से ये वेबसाइट्स को यूज करना डिफरेंट तरह की, इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा ऐप है जिसमें कि और वेब ब्राउजर्स के लिए तो इसमें बटन्स को यूज किया गया है और इसमें हर वेबसाइट पे कुछ नंबर आ जाते हैं और वो नंबर्स बगल में आपको एज ए कीबोर्ड की तरह से दिखाए जा रहे हैं। आपको जो भी वेबसाइट चाहिए आप उस नंबर को अगर क्लिक करेंगे तो वो वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी और अगर आप चाहें तो फिर बैक भी जा सकते हैं इसके और आप किसी दूसरे को करना चाहें तो वो भी आप ओपन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंटरनेट को और जो भी आप साइट्स खोलना चाहें उसके थ्रू आप पूरा फंक्शन कर सकते हैं। ये एक अलग तरह और एक डिवाइस है जैसे कि वेबसाइट्स को और वेब ब्राउजर को हम एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक जो सिस्टम है ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सिस्टम, इसमें एक जो लाइट दिख रही है ये पॉइंटर है और ये पॉइंटर मूव कर रहा है और इसके थ्रू हम लेटर्स को इंडिकेट कर सकते हैं और ये जो लेटर्स इंडिकेट कर रहे हैं ये आई थिंक कि स्क्रीन में फिर उनको शो करेगा, आ जाएगा जी, उसमें वो स्क्रीन में आ जाएगा और उसके थ्रू आप अपना जो भी कम्युनिकेशन है, जो पढ़ाई है, एजुकेशन है, काफी कुछ चीजें हैं वो सब कुछ आप इसमें से कर सकते हैं। तो इसके लिए जो IICP है वो सर्विसेज दे रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है और ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं। तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स फैमिलीज को, बच्चों को देने के लिए और प्रोफेशनल्स के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो जैसे हम लोग भी ये वेबिनार्स या जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है इतने हफ्तों से, इतने महीनों से कर रहे हैं, इसी तरीके से ये भी चीज़ें हैं। तो जिस भी फैमिली को जिस तरीके से होता है तो एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। तो सभी चीजों के लिए आप ढूंढना शुरू करें और इस तरीके से आप अपने बच्चों को इस सोसाइटी में एक्चुअल सेंस में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू मैम फॉर दिस वंडरफुल टॉक, बहुत सारी अच्छी जानकारियां आपने दी। Thank you, Mrs. Jain, because you have helped me a lot actually by translating
everything. मैम क्योंकि हमारे काफी सारे जो हैं पेरेंट्स जो हैं काफी लार्ज चंक हैं जो कि हिंदी वो तो होगा ही जी मैम। तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट क्योंकि फिर उतना एफर्ट्स जो आपने किए वो एफर्ट्स फिर उतने फ्रूटफुल नहीं हो पाते अगर उनको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया जाता। डॉक्टर आशीष घोष सर, आप भी बोलिए सर कुछ, आप अपना जो एक्सपीरियंस है बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, ऐसे परिवारों के लिए बताइए सर। आप म्यूट हैं, आप अनम्यूट करिए। डॉक्टर आशीष आप अनम्यूट करिए अपने आप को। This is actually your code set 115 E115. All these assistive devices. that is wonderful. Actually, this is you are applying it, with the children. It's nothing like it. हाँ वो सर थोड़ा हमारा ये कम्युनिकेशन वाला नहीं है, हमारा जो डॉक्टर साहब का है वो असिस्टिव टेक्नोलॉजी इन मोबिलिटी है। Assistive technology can be anything. Wheelchair is an assistive technology, assistive devices. सबसे बड़ी क्या समस्या होती है ऐसे परिवारों के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है, अक्सर जो भी पेरेंट्स हमारे होते हैं सेरेब्रल पाल्सी के, उनकी सोच होती है कि हमारा बच्चा चलने लगे, चलने लगता है तो हमारी अधिकतर समस्याएं समाप्त हो गई। लेकिन जबको हमको सच्चाई को समझना ये जरूरी है, क्योंकि हमारे देश में एक बड़ा चंक सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित है। लगभग 30 से 40 लाख बच्चे हैं, ऐसे परिवार हैं जो कि सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित हैं। और सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में जो प्रमुख रूप से फिजिकल डिसेबिलिटी को छोड़ दिया जाए तो कम्युनिकेशन की जो समस्या है सबसे बड़ी होती है। लर्निंग कैपेबिलिटी और एजुकेशन, एक प्रोफेशन ज्वाइन करना, वो सबसे बड़ी डिफिकल्टीज होती है। लेकिन देखा गया है कि 60 से 70% बच्चों का आईक्यू जो होता है लगभग सामान्य होता है, सामान्य से बहुत हल्का सा कम होता है या कहीं ज्यादा होता है। लेकिन उनकी कम्युनिकेशन क्षमता की समस्या की होने की वजह से उनकी प्रतिभा को आप निखार नहीं पाते हैं। तो प्रतिभा को निखारना हमारे उन परिवारों के लिए, इस देश के लिए, समाज के लिए बहुत अति आवश्यक है। और उसके लिए जरूरी क्या है, यही हमारे ऑगमेंटेड एंड असिस्टिव डिवाइसेस के द्वारा उन बच्चों को हम पहचान सकते हैं, उनकी प्रतिभा को निखार सकते हैं, उनको एक प्रोफेशनल कोर्सेज करा सकते हैं, वो एक जॉब ज्वाइन कर सकते हैं, वो एक इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। लेकिन समस्या आती है हमारे देश में, जैसे IICP कलकत्ता में ये सब चीजें होती हैं। हमारी संस्था 15 साल से काम करे, लेकिन हम लोगों को ऑगमेंटेड असिस्टिव डिवाइसेस के बारे में नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हम लोग बातें नहीं कर पाते। तो आपको और आपकी संस्था को आगे बढ़ करके देश की तमाम संस्थाएं हैं उनको जोड़ करके उनको ट्रेनिंग देना है, उनको प्रमोट करना है, उनको आगे लेकर के आना है, क्योंकि संख्या हमारे देश में बहुत ज्यादा है। और जब तक हम परिवारों और बच्चों के बीच में एक अवेयरनेस नहीं फैला पाएंगे कि नहीं, चलने से ज्यादा जरूरी है उनकी हाथों की कैपेबिलिटी, उनकी दिमागों की यूटिलाइजेशन। जैसे सेंट स्टीफन का नाम मेरे ख्याल से गांव-गांव में बच्चा भी जानता होगा। वो क्या थे, मोटर न्यूरॉन डिजीज, लिखना नहीं आता था, कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा होता था, कंप्यूटर उनको रीड करके सब रिकॉर्ड में ले आता था, और वही उनका एक रिसर्च होता था, उनकी बुक्स लिखी जाती थी, उनके जो आर्टिकल पब्लिश हुए बहुत सारे हुए, और कोई भी उनपे किसी तरह का कोई संदेह किसी भी साइंटिस्ट को आज तक नहीं हो पाया, और आज तक प्रूव है। तो ऐसे बच्चों में बहुत क्षमताएं होती हैं, उनको निखारने की जरूरत है। लेकिन निखारने के लिए जरूरत है कि उनके लिए उनके अनुसार उस तरह की ऑगमेंटेड एंड असिस्टिव डिवाइसेस उनको दी जाए। तो उनका असेसमेंट भी होना बहुत जरूरी होता है, और असेसमेंट के तौर तरीके एक करेक्ट गाइडलाइन मिलेगा, तभी हम आगे बढ़ करके उनको गाइड कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी आज की अपॉर्चुनिटीज थी। ऐसे बहुत सारे वेबिनार अभी करने होंगे, लोगों को आगे लाने पड़ेंगे, लोगों को प्रमोट करना पड़ेगा, और हमारे अभिभावकों के दिमागों में ये भरना पड़ेगा कि नहीं, सेरेब्रल पाल्सी आज भी है, जीवन पर्यंत रहना है, उनकी मैक्सिमम क्षमता को पहचानना है, लेकिन उससे सबसे बड़ी जरूरत है कि उनकी छुपी हुई प्रतिभा को पहचानना और उनको उभारना। उनको कैसे करना है, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी स्पेशल एजुकेशन, उनकी ट्रेनिंग,
वो अपनी चीजों को बता पाए, वो अपने को कम्युनिकेट कर पाए, जो भी है पॉजिटिव है निगेटिव है, उनकी फीलिंग क्या है, और उसका बेस्ट तरीका जो कि आजकल ऑगमेंटेड डिवाइसेस हैं। सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्रत्येक परिवारों में एक स्मार्टफोन जरूर होता है। कोई ऐसा परिवार गरीब से गरीब होगा, उसके घर में स्मार्टफोन तो जरूर होगा। और जब स्मार्टफोन हो सकता है तो उसमें इस तरह की डिवाइसेस भी आ सकती हैं, बच्चों को पढ़ाया जा सकता है, बच्चों को यूटिलाइज में लिया जा सकता है, तो व्हाई नॉट। तो ये पब्लिक मोड में आना चाहिए। पब्लिक जहां भी सेरेब्रल पाल्सी की संस्थाएं हैं, नेशनल ट्रस्ट है, बहुत सारे जो हमारी मिनिस्ट्री है, या जो हमारे IICP है, इंडियन सेरेब्रल पाल्सी है, आगे बढ़कर के इसको लेके आना है। इसीलिए हम लोगों ने ऑनलाइन वेबिनार किया। ये हमारा 24वां वेबिनार है, हर हफ्ते या दूसरे हफ्ते चलता रहता है, इसीलिए कि कोई नई नई चीजें हम लोग लेकर के आए, डिस्कस करें, पेरेंट्स पब्लिक फोरम पे जाएं, क्योंकि हम आप सभी जानते हैं जब डिमांड होता है तभी चीजें मार्केट में आती हैं, तभी हम आप स्पेशली जगते हैं, तभी हम उसको लोगों के सामने लेके आते हैं। और कई बार बात जब सुनी जाती है तभी उसकी सच्चाई, तभी उसकी गंभीरता को हम आप मानते, अदरवाइज सर के ऊपर से निकल जाता है। एक बहुत अच्छा मैडम ने आज हम लोगों को गाइड किया। कहना चाहूंगी कि आपके यहाँ इतना कुछ हो रहा है, ये कम्युनिकेशन वाले स्पेशली जो चीज है, तो डेफिनेटली जैसा डॉक्टर जैन ने कहा कि जो संस्थाएं हैं जो इस पे काम कर रही हैं उनकी ट्रेनिंग काफी जरूरी है। मैम, आप लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे जैसे त्रिशला फाउंडेशन जैसे या और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जुड़े, हम अपने आप को ट्रेन करें, अपने जो हमारे थेरेपिस्ट स्टाफ को ट्रेन कराएं, और फिर इनका, क्योंकि जो इतनी डिवाइसेस बन रही हैं मैम, उनका यूटिलाइजेशन तो तभी होगा जब उनकी डिमांड होगी। तो वो फिर आप लोग मतलब इतनी सारी अच्छी चीजें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखी है बच्चों की जिनके लिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं चीजें सोल्यूशन, तो वो यहाँ से सोल्यूशंस निकल सकते हैं। ये चीजें मार्केट में अवेलेबल होनी चाहिए या इजीली एटलीस्ट अवेलेबल होने चाहिए कि अगर पेरेंट्स को हम बता सके और पेरेंट्स ऑर्डर करके मंगा सके और उनसे ट्रेनिंग ले सके, तो ये एक जो चेन डेवलप होनी चाहिए, एक वो चेन डेवलप होगी तो ही इन सारी डिवाइसेस का यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। तो ये एक हम लोग की है रिक्वेस्ट की मैडम से और आशीष जी से एक रिक्वेस्ट है कि इसको आप मुहिम के तौर पे लें। तैयार है हाँ, कि थोड़ा सा ऐसी कुछ चेन डेवलप करिए मैम। हाँ, डेफिनेटली हम लोग इस चीज को आगे वो कोलैबोरेशन में ये काम कर सकें। हाँ, डेफिनेटली वी आर ऑलवेज रेडी टू शेयर, टू कोलैबोरेट। जो है तो आपके साथ शेयर करने से हमारा खुशी होगी। जी मैम, थैंक यू। के लिए हम लोग हर वक्त तैयार है, रेडी है। जी मैम, तो वही है मैम, तो उससे काफी लोगों तक ये पहुंचेगा भी, पहुंचेगा। जो एक्चुअली बताया डॉक्टर जैन ने और आपने, तो पहुंचना जरूरी है, इसको पहुंचाना जरूरी है। इसीलिए आप लोग जो आप लोगों का डिमांड होगा, हम लोग डेफिनेटली विल ट्राई टू फुलफिल इट। मैडम, आपके इंस्टीट्यूट से जिस तरह का भी जो भी टॉपिक वेबिनार में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि त्रिशला फाउंडेशन का जो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है लगभग 14,000 का सब्सक्राइबर है। अच्छा। और हर महीने 1000 सब्सक्राइबर बढ़ जा रहे हैं, अभी तो 800 to 900। तो एक बहुत बड़ा चंक जो ऑल ओवर वर्ल्ड देखा जाता है यूट्यूब चैनल पे, तो वो हम लोग आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। जब भी किसी तरह का कोई भी और सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए बेनिफिशियल है, और डॉक्टर आशीष को सर आपको भी नहीं बख्शेंगे हम, आप एक टॉपिक तैयार करके हमारे बच्चों के लिए शेयर करिए, जो भी जिस टॉपिक पर भी आप हमारे बच्चों पेरेंट्स के लिए बोलना चाहते हैं, क्योंकि एक सब चीजें शेयर करने से, डिस्कस करने से हम आप भी सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स और बच्चों को फायदा होता है, और हमारा आपका पर्पज यही है। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों को पता ही नहीं है। हाँ। और अगर अब सही बात यही है कि स्मार्टफोन्स और ये लॉकडाउन ने तो ऐसा किया है कि जो नहीं भी कर सकता था किसी तरह से घर में एक स्मार्टफोन लेकर के आया कि भाई नहीं तो कट गए दुनिया से, तो उसका फायदा मिलना चाहिए। ये बहुत बड़ा एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सके, और जो आज तक जो लोग नहीं अवेल कर पा रहे थे और बहुत ही बुरी कंडीशन में रह रहे हैं, उनकी काफी हद तक मदद हो सकती है इन चीजों से। लोगों को पता चलेगा तभी वो एक्सेस करेंगे इन चीजों को। Definitely, very true. जी मैम, we really would like to share our things, our whatever resources, everything with you.
थैंक यू मैडम, थैंक यू। Thank you, madam. आज आपके आने के लिए यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। आपने Most बहुत welcome. अच्छी आपको इन्फॉर्मेशन शुक्रिया। लोगों से शेयर की है। आपको बट शुक्रिया वो अदा चीजें, करना चाहती हूँ। हाँ नहीं, सभी को एक ट्रेनिंग होगी तो एक अच्छी चीजें मिलेंगी। तो अब हम लोग का समय हो गया, 8 बज रहे हैं, अब हम लोग विदा लेंगे और अगले सेमिनार कब होता है हम लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं और चीजों को टच में रखेंगे और आगे पेरेंट्स इन बच्चों परिवारों के लिए तो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन कर सकेंगे, क्योंकि ऑनलाइन हमारे बहुत सारे परिवार देखते हैं, ढूंढते हैं कहाँ पे क्या जाए, कैसे करें। तो एक बहुत बड़ा चंक पूरे देश पूरे विश्व में इन चीजों को पहुंचाया जा सकता है। थैंक यू मैडम राव मैडम हाँ, आप देख रहे हैं? राव मैडम का लग रहा नहीं है, मैडम चले गए। राव मैडम चले, सुनंदा मैडम चले गए और मैडम भी चले गए। थैंक यू, मैडम भी गुड नाइट। and most welcome, and really I would like to thank you because you have created this opportunity, and I'm sure that there will be many more opportunities actually where we'll be sharing our experiences together. Definitely. We want all And lots of whenever you sessions. find a problem that you want to do something with communication, you want to do something with assistive technology, now you have my email ID, please write to me and we can Yes, ma'am. always video chat, we can always give you online consultation so that you can Thank you, do ma'am. it. Thank you. Thank you, madam. Thank you. Most Thank welcome. you. Bye bye then. Bye. Bye. Bye.